Hello, everyone. Whoever is watching, they can keep in touch with me on the chat box. I will be very active on it. If you are taking XAT this year, this session is extremely relevant for you, and I hope you don't miss it, any part of it. Okay. So, guys, the point is XAT has been testing grammar for quite some time now, right? And you can expect two questions at least from various grammar concepts. So the agenda today is just to go over those topics that are very frequent, okay, and practice those topics with a few questions, okay. But before that, I have this PPT for you guys to kind of stress on the relevance of grammar with this exam, okay. So this is one of those exams, difficult ones, which still test on grammar. I mean, if you look at CAT, if you look at particularly CAT and GMAT also in the focus edition, the latest edition, they have removed grammar mostly, right? So that is one big difference that you will find in this particular exam. So grammar relevance in that, it goes beyond error spotting. Okay, you don't need to spot the error, you need to give the right answer, right? So I mean, apart from the questions, you also have grammar usage in the CR questions, critical reasoning, right? As you can see in the very first one here, deciphering complex arguments requires precise understanding of modifiers and qualifiers, right? Now for that, we need to understand what are modifiers and what are qualifiers. That's the first kind of important step, right? Efficiency, direct grammar questions 2 to 4 per year. Low time investment opportunities because RCs will be taking a lot of time, correct? So in order to save on time, grammar becomes an exceptionally crucial tool for you. And finally, that tests on the application of grammar in nuanced professional prose. Can anybody tell me what does this mean, nuanced professional tone? I mean, why does first of all that test you on this? And second, why do you need a professional tone? Like on the chat box, guys, can you help me with this? I'll be I will move along right now, but if you have the answer, just write it down on the chat box. I will be very happy to read it. Okay. So let's go to the trend, the primary trend that I can identify in the XAT grammar based questions. In 2019, it used to be very, very low. Okay. All the other exams were cutting down, as you can see, from 2018 to 2024 in grammar questions, and XAT was increasing more or less. In 2023, the number was pretty high. Okay. The number of grammar based questions, around 3 or 4. Okay. So that is one big difference, and 2024 also you will see a rising trend. Now, these are the topics that are most important with grammar in that. As you can see, the majority of the questions would rely on the topic of subject verb agreement. Okay. So you are basically asked whether the verb agrees with the subject or not. It's a very simple type of question out there. Then a vast majority of the question will rely on parallelism. Parallelism would be like, when you are combining two, three things, are they in the same form? Do they have the same rhythm? Stuff like that. Then modifiers and pronouns. It sounds very easy, but this is a topic which is pretty technical in nature. So these three make your major chunk. And then you have punctuation questions. Zach loves semicolons. So you would want to brush up on the semicolons and colons and commas. And finally, tenses and the moods. This is very rare, but you should know if a question comes in, you should be able to solve it. Okay. Now, let's look at the type of questions that we have with subject verb agreement. Let's revise the rules first. So the first type would be proximity error. That often hides the subject behind long prepositional phrases. For example, I can say the house
in the forests, forests of Kaziranga. Now, what is the subject you have to understand here? It's not Kaziranga, it's not forests, it is the house. So now the verb that you will go for is or has, not are or have, which are plural in nature. Okay. So this is the kind of proximity error they would introduce you. You need to be very, very alert about it. Like, what is the in a long chain of prepositional phrase, what is the subject? Then you have collective nouns. Now, collective nouns are a double-edged sword. They can either take a plural verb or a singular verb based on the context. So the jury was unanimous, and you can also say the jury are divided. Now, so you see the difference here. When you are saying divided, you are actually talking about individual jury members. So you are using are. But when you are saying unanimous, that is, they are like agreeing with each other, you are saying the jury is on one page. So jury is basically a collective noun, and based on the context, it will kind of go for singular or plural verb. You have to check. Usually, if you can't understand, if it is very confusing, usually you go for a singular one. That is the ground rule. Okay. Now, compound subjects. Compound subjects would be like when you are using a correlative conjunction to combine. For example, neither the car nor the wheels. Now, which is a plural one? Wheels, right? And it is the closer one to the verb. So you will take are or have, plural. But if I turn it around, neither the wheels nor the car, it becomes is or was, because then singular one will be closer. So in compound subjects, the closer one will be deciding the verb. Sorry. Yes, Madhav Thakur, आपका downfall हो रहा है? Downfall मतलब क्या हो? मतलब downfall was as in, can you explain? Quickly. मेरे डाउनफॉल की तुम्हें बड़ी चिंता है माधव? बताओ जरा क्या डाउनफॉल हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करो. विदाउट कॉन्टेक्स्ट आई कांट अंडरस्टैंड. चलो आगे बढ़ते हैं. फ्लाइंग कमेंट. Okay, if you have any serious questions, please post them on the chat box. Okay. Now आगे बढ़ते हैं. Guys, uncountable के traps होते हैं काफी XAT पे, ठीक है? So if you hear the word advice, advice is a noun or a verb? बताना जरा. Is advice a noun or a verb? Madhva Thakur, yeah. Is advice a noun or a verb? So advice with a C, remember, advice with a C is a noun. Okay. And advice with an S is a verb. Okay. So the point is that how should you go about it in this particular question? So if you are being given with a C, if you are being given a noun with C, you should go for advice is. And if you are given a noun with an S, then उस केस में तुम्हें वो तो वर्ब हो गया, तो वो तो अलग ही लेवल है. तो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर एडवाइस विद सी है तो इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन, रिमेंबर. ठीक है. एंड एडवाइस विद एन एस इज अ वर्ब, सो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट काउंटेबल हो जाए तो आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है. ठीक है. और अगर अनकाउंटेबल हो तो यू डोंट हैव टू सी सिंगुलर और प्लूरल. Right, so that's the entire game here. Now, if I talk about, just a moment. So we have additive phrases. Additive phrases ये बड़ा confusing सा वो है, मतलब aspect है.
Sometimes instead of using and to combine, they will give you combinators like as well as, okay, together with or along with, okay. Now what happens here is when you combine two subjects with these connectors, for example Ram along with the monkeys, है ना, रामायण में हुआ था ना, राम along with the monkeys. अब इस केस में सब्जेक्ट को मैं सिंगुलर मानूं या प्लूरल मानूं? So the point is, इस केस में the first part will be the subject, remember. So you have to take is or was or has, whatever singular verbs जितने भी है, is, has, is, was, has, okay. But अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि the monkeys along with the ram, now you will take are, were or have, okay, plural हो जाएगा. So this like and की जगह अगर मैं ये यूज करने लग जाऊं, the entire story changes, correct? तो as well as, together with, along with, they will make compounds, they will make what kind of subjects will you call them? Additive phrases, क्योंकि अगला पार्ट जो है उसको additive माना जाता है, ठीक है. Any doubts, let me know, right? Next जो रूल है वो है और. अब और रूल जो है that is more like, again it will follow the neither nor either or rule, closer to the verb. अगर मैं the boys or the girl बोलूं तो is, और अगर मैं the girl or the boys बोलूं तो are, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. I think अच्छा, portions and fractions में क्या होता है? Sum, all, half, percent, ये सारे के सारे इस केस में फ्रेज डिटरमाइन करता है कि वो सिंगुलर या प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ द बॉयज, 50% of the boys, now are होगा इस केस में, correct. But if I say 50% of the oil का अनकाउंटेबल हो गया यहाँ पे, तो इस केस में is हो जाएगा. अनकाउंटेबल में हमेशा is, ठीक है. This is very serious stuff for error correction guys in that. तो अगर आपको वो जो 2-3 questions correct करने हैं instead of looking at my popularity, so please learn with me, post in the chat box whatever questions you have, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ईदर और, नीदर नॉर वगैरह वगैरह ये सारी चीजें कोरिलेटिव कंजंक्शंस के कैटेगरी में आती हैं. कलेक्टिव वी हैव कंप्लीटेड, नंबर वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मॉडिफायर्स. ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, सो वी विल कवर अ बिट ऑफ थियरी हियर, ठीक है. व्हाट आर मॉडिफायर्स गाइस? लाइक इफ यू हैव एन आइडिया, व्हाट्स द डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ मॉडिफायर्स? टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये है कि any extra information in a sentence is a modifier. बेसिकली ऐसा इंफॉर्मेशन जो आप रिमूव भी कर दो किसी सेंटेंस से तो भी वो सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है. एग्जाम्पल, a tall boy is riding is going, ओके, ये मेरा सेंटेंस है. तो अगर मुझे ये पता करना है कि व्हाट इज द मॉडिफायर, तो क्या मुझे करना पड़ेगा? मैं अगर अ हटा दूं, टॉल बॉय इज गोइंग, इट काइंड ऑफ बिकम्स रिमेन्स सेंसिबल. सो दिस इज अ मॉडिफायर, लेट्स कॉल इट M1, ठीक है. टॉल को हटा देता हूं तो बनेगा अ बॉय इज गोइंग, तो दिस टॉल बिकम्स माय सेकंड मॉडिफायर, ठीक है. बट अगर मैं बॉय को हटा दूं सेंटेंस से तो क्या बनेगा? अ टॉल इज गोइंग, विच इज नॉनसेंसिकल, तो बॉय इज नॉट अ मॉडिफायर, ठीक है. इज को हटा दूं तो मेन वर्ब है वो, सो इट्स नॉट अ मॉडिफायर. गोइंग मेन ऑब्जेक्ट है तो नहीं हटा सकते. सो द पॉइंट इज मॉडिफायर इज एनी इंफॉर्मेशन दैट इफ रिमूव्ड डजंट ब्रेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली. होप इट इज क्लियर, है ना. तो अगर हम यहां देखें इनकरेक्ट, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज वर ब्यूटिफुल, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एरर? वी विल कॉल दिस डैंगलिंग मॉडिफायर एरर. ये कब होता है डैंगलिंग मॉडिफायर एरर? ये तब होता है जब हर मॉडिफायर का एक सब्जेक्ट है, करेक्ट. अगर मैं अ का सब्जेक्ट बोलूं तो वो है टॉल, आई मीन अ बॉय, सॉरी, अ का सब्जेक्ट है बॉय. टॉल का सब्जेक्ट अगर मैं बोलूं तो वो है बॉय. तो इस केस में वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, हु वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, दैट सब्जेक्ट इज मिसिंग, ठीक है. सो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द मॉडिफायर इज मिसिंग, इट इज कॉल्ड अ
dangling modifier error. Okay. So the point is how will you be tested? ऐसा क्यों है कि यहाँ पे walking यहाँ पे एक dangling modifier error, because the trees can't be walking down the street, ना? Doesn't make sense, right? Okay, dokes. So guys, we have two kinds of modifier error, one dangling and one misplaced. Now misplaced modifier में क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? So if I take a sentence like if I take a sentence like coming out of the store, a wallet was lost by Jack. Okay, a wallet was lost by Jack. Now ये किस तरीके का error होगा? If you know the answer, let me know on the chat box. Coming out of the store, a wallet was lost by Jack. Now, obviously, wallet can't be coming out of the store. Obviously, Jack was coming out of the store. And the modifying क्या है? Clause, correct? This can be called a clause because there is a verb here, right? Acha, quick question for you guys. What is the difference between a phrase and a clause? बहुत ही basic question है, ठीक है? Phrase versus clause, क्या difference होगा? जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, please answer, right? So the point is कि coming out of the store is a modifier. What kind of modifier? An adjectival clause. But more importantly, वो कहाँ पे placed है? वो placed है in the beginning of the sentence, जो कि subject बनाता है wallet, right? So wallet can't be coming out of the store. Therefore, this will be called a misplaced modifier error. ठीक है? जब आपके पास actual subject है, which is Jack, that is why it is misplaced. If Jack was not there, then it would be dangling. Dangling में missing हो जाता है ना, the missing subject, right? So misplaced को how to fix it? Just take the modifier and place it at the right place. A wallet was lost by Jack coming out of the store, like that. How to fix a misplaced modifier error? Just place it in the right place. Okay. So dangling is missing subject of modifier, and misplaced is wrongly placed modifier. दोनों में difference, I think it's clear. Okay. All right. If I talk about parallelism, the next topic, this is going to be very, very crucial because इससे सबसे ज़्यादा questions आते हैं. Parallelisms में आपको एक list दे दिया जाता है कुछ कुछ चीजों का. For example, hiking, swimming, running. अब इस list के अंदर आपको बस ये देखना है कि pattern match कर रहा है कि नहीं. If one is ing, all of them should be ing, right? For example, आप देखेंगे driving a car is easier than riding a bike. Comparison हो रहा है. अब अगर मैं बोल देता कि driving a car is easier than to ride a bike, that would be a mistake. Okay, driving a car is easy. To drive a car is easier than to ride a bike. ये parallel होता. या फिर बोलते कि driving a car is easier than riding a bike. So this comparison would be parallel. है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. So let's talk about pronouns, clarity and case. Now pronouns का एक angle है. आपको एक chart बना लेना चाहिए. So if I talk about pronoun case, okay, if I talk about pronoun case, तो क्या एंगल है प्रोनाउन केस का? पहला तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन्स हैं. ओके, सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, मी, राइट, वी, माई भी वो है. अब ये पर्सन हो गए. हाँ जी बताइए निश्चय. लेट मी नो क्विकली. ग्रामर बेसिक्स से कोई टॉपिक हो तो ही बताना, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? ग्रामर बेसिक्स का टॉपिक है. Okay, till Nishchay is typing.
हाँ जी बताइए। जैट फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम भी एग्जाम कॉलेज में अप्लाई करना होता है अलग से? यस, आपको अलग से करना होगा। नहीं नहीं, पॉइंट ये है कि जैट में ना ऑटोमेटिक एप्लीकेशन होता है एक्सएलआरआई का, ठीक है। ऑटोमेटिक एप्लीकेशन जो होता है वो एक्सएलआरआई का होता है। एंड जहां तक मेरा अपडेशन है, बट एक बार तुम्हें देख लेना चाहिए, आई थिंक एग्जाम में तो करना ही होगा, ठीक है, अलग से। एंड एग्जाम का मुझे आइडिया नहीं है, बट करना होता है। मतलब इट्स मोस्टली दैट जैट विल आस्क यू टू फिल द फॉर्म सेपरेटली, ठीक है। तुम जब जैट लेते हो तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन होता है एक्सएलआरआई दिल्ली और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के लिए, क्लियर, राइट। सो अब आते हैं प्रोनाउन केसेस पे। देखो पॉइंट ये, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आई, मी, वी, माई। अब अगर प्रोनाउंस के वेरिएबल्स देखो कि देयर आर टू मेनी, राइट निश्चय, सो देयर आर टू मेनी प्रोनाउन केसेस, ठीक है। पहला एंगल है कि ध्यान से देखना, पर्सन, ये डिसाइड करना जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम टॉकिंग, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फिर आता है केस, सब्जेक्ट केस है या ऑब्जेक्ट केस है या पोजेसिव केस है, तीन केसेस होते हैं, ठीक। सब्जेक्ट केसेस आई, वी, राइट। ऑब्जेक्ट केसेस मी, अस, ठीक है। फिर आता है पर्सन हो गया, केस हो गया, फिर होता है जेंडर। अब थर्ड पर्सन में ही जेंडर आता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में जेंडर आता भी नहीं है, इफ यू लुक एट इट, ठीक है। आई इज जेंडरलेस, राइट, me is genderless, but he, she is, it has the information of gender in it. In that it has a third person में gender neuter भी होता है it, ठीक है। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट का एरर काफी ज्यादा देता है सैट, ठीक है। इसका एक बहुत से अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, बट अभी हम यहीं से ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ईच स्टूडेंट ब्रॉट देयर बुक, एकदम प्रॉपर जैट लेवल एरर है ये। देयर कभी आप ले ही नहीं सकते ईच स्टूडेंट के साथ, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ईच स्टूडेंट इज अ सिंगुलर एंटिटी, है ना। आपको लग सकता है ईच स्टूडेंट इज प्लूरल, बट आप ईच स्टूडेंट इज लेते हो ना वर्ब में, राइट, या हैज लेते हो, तो वो सिंगुलर एंटिटी है। बिल्कुल वैसे ही आप देयर नहीं लोगे, या तो लोगे ही और हर, ही और शी, हिज और हर, या लोगे हिज। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन दिख जाए ना जिसमें सिर्फ हिज है, वो राइट होगा बाय द वे, ओवर देयर। ये बात सबको क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। ये क्वेश्चन आ चुका है बाय द वे सैट में 2024, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई और मी फॉर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन यू एंड आई। अब ये डिपेंड करता है कि वो कहां पे है, ध्यान रखना, ये सिर्फ ग्राउंड रूल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ये रुक जाओ। पॉइंट ये है कि इफ आई से दिस इज बिटवीन यू एंड मी, तो ये सही है, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है ना, ये यू एंड मी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मी सही है यहाँ पे। बट अगर मैं बोलूं कि बिटवीन यू एंड आई, तो आई सही हो जाएगा। बिटवीन यू एंड आई, लेट्स डू दिस टुगेदर, लेट्स डू दिस, मतलब सीक्रेट वाला जो होता है ना मामला, लेट्स डू दिस। सो पॉइंट ये है कि शुरू में तुमने यहाँ पे आई लगाया क्योंकि वो सब्जेक्ट वर्जन था, इट वॉज द सब्जेक्ट वर्जन। एंड तुमने यहाँ पे मी लगाया क्योंकि इट इज द ऑब्जेक्ट वर्जन, सो इट इज लोकेशन डिपेंडेंट कि कहां पे वो होगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड हुम बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का भी एरर काफी आता है। द मैन हुम कॉल्ड यू, द मैन हु कॉल्ड यू, द मैन हु कॉल्ड यू, बट एट द सेम टाइम द मैन हुम यू कॉल्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस बन जाता है फिर उस केस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टेंसेस। ओके, क्विक क्वेश्चन टू यू गाइस, whoever is watching, how many tenses are there? जल्दी बताइए। कितने टेंसेस होते हैं? निश्चय एंड आशु, कितने टेंसेस होते हैं? हाउ मेनी टेंसेस आते हैं? नंबर ही टाइप करना है, जल्दी कर दो मैसेज में।
चलो take a guess ना, guesswork is okay, nobody is gonna judge you. I mean, even if they judge you, what's the point? What's the problem? Okay, so there are 12 tenses, ठीक है? And in 12 tenses में सबसे important tenses कौन से हैं जिनको तुम्हें अलग से पढ़ना चाहिए? पहला है पास्ट परफेक्ट, पहला है परफेक्ट टेंसेस जो कि है 3, दूसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ठीक है? Now the point is everybody knows the simple tenses and the simple continuous tenses, but perfect and perfect continuous tenses का अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को, तो इस पे मैं डीप पे नहीं जाऊंगा, बट यू शुड स्टडी इट बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आगे आप देखेंगे, जैसे ये है सब्जंक्टिव। अच्छा, मूड ऑफ अ सेंटेंस, कितने मूड्स होते हैं जरा बताओ, हाउ मेनी मूड्स आर देयर? मूड्स होते हैं 4 प्राइमरीली, ठीक है? पहला है आपका इंफॉर्मेटिव और डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं उसको, ठीक है? दूसरा है इंपरेटिव, कमांड देना किसी को। तीसरा है इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछना। एंड फाइनली आता है, फिर कंडीशनल्स आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फिर आता है सब्जंक्टिव मूड। ये इसका क्वेश्चन आता है। अब इसका इसका मतलब, सब्जंक्टिव का मतलब होता है विशफुल थिंकिंग, ध्यान रखना, ओके? सो इफ आई वर द सीईओ, अब नॉर्मली डिक्लेरेटिव केसेस में आई वॉज द सीईओ होता है ना, डिक्लेरेटिव केसेस में, बट सब्जंक्टिव में ये जो वर्ब है ये चेंज होके वर्ब बन जाता है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है? इफ आई वर द सीईओ आई वुड चेंज द पॉलिसी। तो ये सब्जंक्टिव के कुछ रूल्स हैं कि यहाँ पे वर है तो यहाँ पे वुड होना चाहिए, और अगर होता है अगर कंडीशनल है कि इफ आई वॉज द सीईओ देन आई वुड हैव चेंज द पॉलिसी, पूरा आना चाहिए कंडीशनल, ठीक है? तो ये इफ सब्जंक्टिव वाला है, तो ये बेसिकली अनदर थिंग टू स्टडी दैट यू गॉट, विच इज कंडीशनल्स एंड सब्जंक्टिव्स, ठीक है? डीप पे अब जा नहीं सकते, इट्स अ यूट्यूब लाइव सेशन, राइट? ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया जो आपको पढ़ना है गाइस? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल्स, मॉडिफायर रूल्स, पैरेललिज्म रूल्स एंड टेंसेस एंड सब्जंक्टिव मूड, ठीक है? लेट्स लुक एट अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, देन वी विल डू सम प्रैक्टिस टुगेदर। ये वाला देखिए जरा, पास्ट ईयर क्वेश्चन को ऐसे आंसर दे रखा है यहाँ पे, तो आप बस देख लो कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, none of the furniture were broken in the move। अब none जो है वो भी हमेशा सिंगुलर लेता है, ध्यान रखना, none, ठीक है? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, मतलब फर्नीचर इज अनकाउंटेबल, नन ऑफ द बॉयज आर होगा, ठीक है? नन ऑफ द बॉयज। वैसे एक बात बताऊं आपको, अगर यहाँ काउंटेबल है ना, तो नन ऑफ द बॉयज इज भी ठीक है, आर भी ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बट अगर यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल है फर्नीचर सीधे, तो यहाँ पे आप प्लूरल ही, यहाँ पे प्लूरल ले ही नहीं सकते, यहाँ पे वर्ब इजी होगा या वर्स ही होगा, वटेवर, ठीक है? सो नन ऑफ द फर्नीचर वाज ब्रोकन इन द मूव। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज है क्लोजेस्ट जो कि है प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एरर आ गया, वर होना चाहिए, राइट? द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, अब हैज यानी कि सिंगुलर ले रहे हैं इसको हम, इट्स यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन है, बिल्कुल करेक्ट है सो फार, कलेक्टिव नाउन का, ठीक है? इफ ही वाज हियर ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहां सब्जंक्टिव में इफ ही वर हियर विशफुल थिंकिंग आना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is an actual PYQ guys, the company's decision to, ये आपका phrasal verb का question है, call off the project was met with resistance by the workforce। now among confusing था, right? with out है एंड फॉर आउट है, तो आपके पास ए एंड सी आपके कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनते हैं, और अमंग जो है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, थोड़ा सोचने पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं guys, quickly let us understand, just a moment, let us understand this use of colons, semicolons
एंड कॉमर्स, क्या डिफरेंस है तीनों में? देखो, कॉमर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट टू अ डिपेंडेंट क्लॉज, हमेशा ध्यान रखना. सो अ कंप्लीट क्लॉज टू एन इनकम्प्लीट क्लॉज is what you use comma to connect here. अब इसके कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा इसको ना समझेंगे, क्योंकि और इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा. आई एम राइटिंग ऑन टॉप ऑफ दिस. एक कंप्लीट क्लॉज ले लो कि द बॉयज आर ईटिंग. ओके, अब तुम्हें इस कंप्लीट क्लॉज में यू वांट टू पुट इन एन इनकम्प्लीट क्लॉज. लेट्स से वेरी वेरी हंग्रीली, ठीक है, वेरी हंग्रीली. ये तुम डालना चाहते हो इनकम्प्लीट क्लॉज इनसाइड द कंप्लीट क्लॉज. अब तुम इसको या तो बिगिनिंग में रख सकते हो, या एंड में रख सकते हो, या बीच में रख सकते हो. करेक्ट. अगर तुम इसको बिगिनिंग में रखोगे तो यू नीड वन कॉमा. तो अब तुम ऐसे लिखोगे कि वेरी हंग्रीली द बॉयज आर ईटिंग. दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हु वाज हंग्री? द बॉयज. मॉडिफायर का रूल भी फॉलो कर रहा है, बिकॉज दिस विल बी अ मॉडिफायर इन दैट केस. ठीक है, वेरी हंग्री. अब अगर तुम इसको बीच में रखना चाहो तो तुम इसको बॉयज के आगे रख सकते हो, बट इन दैट केस यू विल नीड टू कॉमास, राइट. सो द बॉयज कॉमा वेरी हंग्रीली कॉमा क्लोज आर ईटिंग. राइट. इस केस में आपको इंडिपेंडेंट कब मिलेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज हाउ टू गेट, क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा. Then you have to connect the beginning clause with the end clause to get the independent clause. So you have to remove very hungrily from the sentence to see what's the main clause. Last में आप इसको technically रख नहीं सकते क्योंकि modifier error आ जाएगा. So the boys are eating very hungrily. फिर comma नहीं रख सकते उस केस में. You have to like directly state it. ठीक है? Now commas का एंगल समझ गया. Commas are used to connect one complete to another incomplete, or a series like list. ये सेकंड यूसेज है कॉमा का, टू जॉइन अ लिस्ट. ये दोनों यूसेजेस सेपरेट है बाय द वे. पहला है टू कनेक्ट क्लॉजेस, ठीक है. दूसरा है टू कनेक्ट लिस्ट्स. अब आपको मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो दिखाता हूं, ठीक है. कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो क्या होगा कि आई विल बी शोइंग यू अ सेंटेंस विद अ लिस्ट एंड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है. एग्जाम्पल वेरी हंग्रीली वाला लेते हैं. वेरी हंग्रीली the comma the boys were eating, the boys were eating mangoes, oranges and other fruits. ठीक है. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यू हैव टू मेन, वन कॉमा इज कनेक्टिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड दीज रेस्ट ऑफ द कॉमास इज जस्ट अ लिस्ट. और आप देख सकते हैं कि एंड से पहले मैंने कॉमा डाला है. दिस इज इंपॉर्टेंट. इट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कॉमा, एंड ये हम रेगुलरली हटा देते हैं, बट ये होना चाहिए एंड से पहले. ठीक है, जब खासकर एक लिस्ट. ओके, क्विक डेफिनेशन. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ लिस्ट इन ग्रामर? लिस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? लिस्ट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ at least 3 elements. Okay, at least 3 elements. And when you are joining two clauses, that means you need at least 2 clauses. ठीक है, 2 clauses, 3 elements list. Okay, let's now move on to smaller issues that go. देखो, rules पता होना अच्छी बात है, बट कभी कभी ZAD ना बड़े सिंपल एरर्स दे देता है, और सिंपल एरर में ज्यादा दिक्कत होती है, टू टेल यू द ट्रूथ इन ग्रामर. ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड में तो तुम रूल बेस्ड कर लोगे, ठीक है, बट सिंपली इट इज द फैस्टिडियसनेस ऑफ द आई दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. जैसे कि देखो, इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट, ये है नाउन, ये है वर्ब. ठीक है. लेस वर्सेस फ्यूअर. नाउ लेस अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, फ्यूअर यूज होता है काउंटेबल के लिए. तो गाइस, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना
कि he has lesser cars than him, गलत है, क्योंकि less जो है वो cars या countable nouns के लिए यूज होगा ही नहीं. He has fewer cars, you have to say. more के केस में सेफ है, less का भी उल्टा more, fewer का भी उल्टा more. ठीक है. Now its versus it apostrophe s, ये है आपका possessive pronoun pp, और ये है आपका it और is का कॉम्बिनेशन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन. सो ये सिंपल कुछ चीजें हैं जो आंखों से निकल जाती हैं. ठीक है. अच्छा, वाई आर सेमीकोलन्स यूज्ड, वाई आर कॉमास यूज्ड? भाई सिंपल, कंप्लीट सेंटेंस टू इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है. इनकम्प्लीट को हम या तो शुरू में रख सकते हैं 1 कॉमा, लास्ट में रख सकते हैं 1 कॉमा, बीच में रखेंगे तो 2 कॉमास. ठीक है. तो वाई आर सेमीकोलन्स यूज्ड इज द क्वेश्चन. देखो, सेमीकोलन्स आर यूज्ड फॉर कंप्लीट स्टॉप or not a complete stop, a full pause. Okay, तो ऐसे समझ लो कि कॉमास आर हाफ पॉज. कॉमास आर हाफ पॉज. जब आप कॉमा को पढ़ते हो ना तो आप आधा पॉज लेते हो इन अ सेंटेंस, जब आप जोर से पढ़ते हो. ठीक है. और जब आप सेमीकोलन को पढ़ते हो तो आप फुल पॉज लेते हो, और फुल स्टॉप में भी फुल पॉज लेते हो. ठीक है. फुल स्टॉप में भी फुल पॉज लेते हो. यानी कि अ सेमीकोलन टेक्निकली इज सिमिलर टू अ फुल स्टॉप. इट ब्रेक्स द सेंटेंस डाउन. So there are two uses of semicolons. One, to connect two independent clauses, and second, to connect a nested list. ठीक है, nested list. अब नेस्टेड लिस्ट क्या होता है वो थोड़ा समझेंगे. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यू विल नीड अ सेमीकोलन, ध्यान रखिएगा. या फिर फुल स्टॉप विल आल्सो वर्क, बट फुल स्टॉप में पूरा ब्रेक है और सेमीकोलन में थोड़ा सा कनेक्टेडनेस रहता है दोनों क्लॉजेस में. और नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड आर दिल्ली इंडिया, ठीक है, टोक्यो जापान, जकार्ता इंडोनेशिया. ठीक है, सम ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब इस केस में आप सब पे कॉमा तो नहीं लगा सकते, करेक्ट? इफ यू पुट कॉमास एवरीवेयर देन इट विल साउंड लाइक इवन इंडिया, जापान एंड इंडोनेशिया आर ऑल्सो कैपिटल्स, ऐसा लगेगा. तो इस केस में यू नेस्ट इट विद अ सेमीकोलन. तो फर्स्ट यू यूज अ कॉमा, दिल्ली कॉमा इंडिया सेमीकोलन, जकार्ता कॉमा इंडोनेशिया सेमीकोलन, टोक्यो कॉमा जापान सेमीकोलन. ठीक है. तो नेस्टेड लिस्ट्स में काम आता है सेमीकोलन्स. होप इट इज क्लियर. और थोड़ा अगर अच्छे से समझाना है तो बताना. ठीक है. नाउ ऑक्सफोर्ड कॉमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपोस्ट्रोफीज का यूजेज अमेरिकन में होगा या ब्रिटिश में होगा? लेटेस्ट इज अमेरिकन, फॉलो दैट ओनली. ठीक है. चलिए, वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. राइट, here is your question. Solve it and let me know the answer.
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि the particular design of muscles and bones in the neck and limbs of the turtle allow that it can draw in its exposed parts such that an attacker can find nothing but hard shell to bite. जरा बताओ ए में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है अभी तक जो थियरी आपने पढ़ा? Does A have any problem? A में the subject is the word design, correct? The particular design. And the verb is allow. Does the subject and the verb agree? No, because the design allows hona chahiye, right? So A is wrong. The particular design of muscles and bones in the neck and limbs of the turtle, again same error getting repeated, allowed. The particular design of muscles and bones in the neck and limbs of the turtle allows. Now we have correct. ठीक है, हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं allows के लिए. The question is what would you take and why? If you look at C, the particular design of muscles and bones in the neck and limbs of the turtle allows for it to draw. Incorrect preposition. C is out of the question here. D, the particular design of muscles and bones in the neck and limbs of the turtle allows that it can. Sudden appearance of a pronoun out of nowhere. Okay? Option E is the right answer. Okay? Guys, I hope you understood the explanation. Let's go to the next one. Go for it. 2 minutes for you to solve. Okay? ये pure XAT formatted questions है guys. If you are taking XAT, solve it. हाँ जी, क्या आंसर है बताइए? So option A को देखते हैं थोड़ा. According to a recent study by Rutgers University, the number of women in state legislatures has grown in every election since 1968. बहुत ही अच्छा लग रहा है. मतलब has भी है यहाँ पे and we are talking about the word number. तो ये singular होता है और ये भी singular होता है. So it's perfect. Option B देखिए. According to a recent study by Rutgers University, the number of women who are. This is wrong. क्योंकि women are ठीक है, but number of women is होगा ना, right? So B is out. C option. According to a recent study by Rutgers University, there has been growth in the number of women in state legislatures. ये काफी doubtful है, इसको हम loop पे रखेंगे. तो option A is doubtful, option C is doubtful. According to a recent study by Rutgers University, a growing number of women have. Now, number of women कभी भी plural होगा ही नहीं. ये spot करना है आपको, ठीक है? In real time.
women have होता है, but number of women has होना चाहिए. According to a recent study by Rutgers University, women have been growing. Now ये ठीक है, यहाँ से number हटा ही दिया है ना? तो women have been growing in number, but ये थोड़ा awkward construction है. In legislatures, in number in legislatures. तो E को मैं awkward construction से out कर सकता हूँ. तो A versus C is your answer. If I ask you what would be your answer, please tell me. A versus C. बताइए guys. Whether it is A or it is C. Waiting for 10 seconds. कोई आंसर देना चाहेगा? A versus C का? So the answer is option A. C में गलती क्या है? According to a recent study by Rutgers, there has been growth in the number of women in state legislatures. यहाँ पे एक modifier error है, बताओ क्या है? Modifier error भी नहीं है यहाँ पे actually in the growth in the number of women in state legislature has been since 1968. Okay, so have grown versus has been growth. There has been growth. ये awkward construction है because this kind of is a wrong tense as per the sentence, you can say. ठीक है, बाकी awkward तो था ही ये, मतलब there has been growth कौन ही बोलता है ना, but tense wise also technically we can prove this wrong. Okay, because there is a since 1968 and there has been growth also. मतलब ये हम ऐसे has been नहीं लगा सकते. ठीक है, since बोला है तो has been growing होना चाहिए. Has been growth क्या है? ठीक है, like that. चलो आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस. 1 मिनट दे रहा हूं आपको मैं. ठीक है, इसके लिए. अच्छा, इक्विपमेंट और टेंट्स है यहाँ पे. ठीक है, ध्यान रखना. तो इक्विपमेंट प्लस टेंट्स. So these are two words, equipment and tents. So we have standard scuba experiment tend to mask underwater sounds with its bubbling noise. Okay, so tends to mask. Tends. Now equipment जो है वो कैसा है as a word? It is an uncountable noun. मतलब अजीब लगता है सुनने में, but it is an uncountable noun. Equipments नहीं होता है. ठीक है, so standard scuba experiment tend होना चाहिए. First insight should be this. First insight should be this. ठीक है, now once you have tend, you will obviously auto out all the tends which is C and E. तो आपके पास बचते हैं A, B और D. तो उसमें से आप क्या चूज करोगे? दैट इज द क्वेश्चन. बताओ. A, B and D. Okay, A, B and D में से you have to select. Let's talk about option B. Standard scuba equipment tend to mask underwater sounds with its noisy bubbles. Right? Now, noisy bubbling noise versus noisy bubbles. यहां पे आपको मीनिंग पे जाना पड़ेगा. Bubbling noise versus noisy bubbles. अब noisy तो आउट ही है ना. मीनिंग वाइज इज इट noisy bubbles that you are talking about? Obviously not. तो B आउट हो जाता है. अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं, A and D. So what would you go for?
A says standard A तो सही था. I could not find any errors. Right? Let's read D. A versus D. Standard scuba experiment tend, ठीक है, to mask underwater sounds with their bubbling noise. तो यहाँ पे main difference between A and D is their versus its. अब equipment क्या था? हमने क्या बोला? Equipment is an uncountable noun, right? अब uncountable noun its लेगा या their लेगा is the question. तो its लेगा वो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन. Oh, sorry, my bad. एक गलती हो गई है D. So equipment जो है यहाँ पे वो their लेगा, not its. ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि equipment uncountable भले ही है, but it is a collective noun. समझ गए ना? It is an uncountable noun, but it is a collective noun. And collective noun मैंने क्या बताया था आपको? It can either go towards a singular direction or a plural direction based on its context. Okay, I hope it's clear. Let's go for this. 20 seconds. Kindly solve this question, guys. So शुरू करते हैं. If I talk about option A, what error can you spot? Based on pinto beans and corn tortillas, the Paima Indians have a diet that derives 70% of its protein. Diet है its, ठीक है? Pronoun ठीक है. Paima Indians plural है, तो have होना चाहिए, ये भी ठीक है. बट एक मॉडिफायर चेकिंग करने की जरूरत है यहाँ पे. बेस्ड ऑन पिंटो बीन्स एंड कॉर्न टॉर्टियाज, व्हाट इज बेस्ड? ऑब्वियसली द डाइट, करेक्ट. तो मॉडिफायर और उसका सब्जेक्ट बहुत दूर अगर हो जाए तो वो एरर है. इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक दैट द पाइमा इंडियंस आर बेस्ड ऑन द पिंटो बीन्स एंड कॉर्न टॉर्टियाज. कैन यू कॉल दिस अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर एरर? यस, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर एरर. अब यही जो एरर है आपको अगर रिपीट होता हुआ दिखे, इट विल बी वेरी फास्ट. बी हैज द सेम एरर, ठीक है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर एरर. सो बी इज आउट.
Let's talk about option C. Option C fixes this error. Based on the pinto beans and corn tortillas, the diet of the Paima Indians. This is proper. So C को हम रखेंगे लूप में, ठीक है. बाकी सब में है ठीक, बट डी में डाइट्स बन जा रहा है. अब डाइट्स मुझे चाहिए ही नहीं प्लूरल, ठीक है. सो डाइट्स आउट है. तो हमारे पास बेसिकली दो रियलिस्टिक ऑप्शंस बचते हैं, सी और ई. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सी और ई में से आप क्या चुनेंगे? People who are watching, I'm going to wait for 30 seconds. C versus E. What would be your answer? People who guess the answer as C, they are absolutely correct. Why? Because E में देखिए जरा. Based on the pinto beans of and corn tortillas, the diet of the Paima Indians deriving 70%. This is awkward construction. Okay. So do the next question, please. Okay, so this is going to be the last question of the day. ध्यान से देखिएगा. Unlike musical talent or creative skills, there is disinclination on the part of many participants in the program to acknowledge the degree to which their writing talents are. काफी खतरनाक सेंटेंस है ना? Unlike musical talent, क्या ये यहाँ पे हम कोई मॉडिफाइड एरर स्पॉट कर सकते हैं कि देयर इज डिसइंक्लिनेशन में कुछ दिक्कत? हाँ, एक कंपैरिजन एरर तो लग ही रहा है, क्योंकि वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग म्यूजिकल टैलेंट और अदर क्रिएटिव स्किल्स टू सम अदर स्किल्स, राइट? सो ये जो सम अदर स्किल्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज मतलब आफ्टर द कॉमा वी शुड हैव सम अदर स्किल्स. बेसिकली देयर इज डिसइंक्लिनेशन इज रॉन्ग, राइट ना? मतलब अनलाइक म्यूजिकल टैलेंट, एक्स टैलेंट, ये पैरेलल होता है. अगर मैं बोल दूं अनलाइक म्यूजिकल टैलेंट, डिसइंक्लिनेशन, डज इट साउंड पैरेलल? नॉट एट ऑल. सो ए तो पैरेललिज्म की वजह से आउट हो गया, ठीक है. ऑप्शन बी, अनलाइक म्यूजिकल टैलेंट और अदर क्रिएटिव स्किल्स व्हिच दे एडमिट दे लैक, ये एक मॉडिफायर, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. Many participants. Now problem ये है कि unlike musical talent, many participants. Again the modifier error has come into picture. ध्यान से देखिएगा, C fixes that error very subtly. Unlike musical talent or other creative skills, writing talents, right, bring out a disinclination. तो ये अच्छा लग रहा है, मतलब इसको लूप पे रख सकते हैं. इतना भी अच्छा नहीं कि सिलेक्ट कर लें अभी. Many people in the program willing to admit that they lack musical talent or other creative skills are disinclined to acknowledge that their writing skills are weak.
परफेक्ट है, लूप में रख सकते हैं, देयर आर नो एरर्स. Many people in the program have a disinclination to acknowledge the weakness of their writing talents while willing to admit their lack of musical talent or other. Now इसको भी लूप पे रख सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा, करेक्ट. नाउ हमें लेना कौन सा है इज द क्वेश्चन बिटवीन सी, डी और ई. ठीक है. प्रॉब्लम विद सी, सी पे सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख सकते हैं. देखिए जरा, अनलाइक म्यूजिकल टैलेंट और क्रिएटिव स्किल्स, writing talents bring out a disinclination in many participants in the program to acknowledge. ये गलत है. I hope it is clear कि why it is wrong. See, unlike musical talent or other creative skills, writing talents bring out a disinclination in many participants. Many participants भी गलत है, many participants होना चाहिए था ideally. ठीक है, बट ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. In the program to acknowledge जो है ये गलत है. इन एक्नॉलेजिंग या कुछ मतलब पूरा ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन बन रहा है. मतलब वर्ड ऑर्डर ही खराब हो रहा है. देयर इज अ वर्ड ऑर्डर दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश व्हिच इज पर्टिकुलरली रॉन्ग हियर. ठीक है. नाउ लेट्स लुक फॉर डी एंड ई. मेनी पीपल इन द प्रोग्राम विलिंग टू एडमिट दैट दे लैक म्यूजिकल टैलेंट और अदर क्रिएटिव स्किल्स. मतलब ये कैसे लोग हैं? हु आर विलिंग, ये मॉडिफायर 1 है. अब ये मेन सेंटेंस है. मेनी पीपल इन द प्रोग्राम आर डिसइंक्लाइंड टू एक्नॉलेज दैट देयर राइटिंग स्किल्स आर वीक. ये भी ठीक है. एक को एडमिट कर रहे हैं, दूसरे को एडमिट नहीं कर रहे हैं. सिंपल. ठीक है, ये काफी अच्छा है ऑप्शन. मेनी पीपल इन द प्रोग्राम हैव अ डिसइंक्लिनेशन टू एक्नॉलेज द वीकनेस ऑफ देयर राइटिंग स्किल्स. डिसइंक्लिनेशन टू एक्नॉलेज, अगेन ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन. while willing to admit their lack of musical talent or this. तो so far तो ये पैरेलल था. सो फाइनल ऑप्शन तुम्हारे पास सी वर्सेस ई है, जिसमें सी इज अ बेटर बिकॉज डिसइंक्लिनेशन टू एक्नॉलेज इज एन इडियोमैटिक एरर. ठीक है. तो सॉरी, डी वर्सेस ई था फाइनल. सी तो आउट हो गया था, वर्ड ऑर्डर खराब है. तो डी वर्सेस ई में अगेन टू एक्नॉलेज आ जा रहा है, जो कि आपका पैरेललिज्म को ब्लॉक कर रहा है, इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर बना रहे हैं. therefore D is the right answer. Hope it is clear. गाइस, कोई डाउट हो तो पूछ लो यार. काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो जैट पे आते भी हैं. ठीक है. एनी डाउट्स विद ग्रामर सो फार? ठीक है. सो आई विद दैट होप कि यू विल प्रैक्टिस मोर ग्रामर क्वेश्चंस. आई विल बीट यू अजीव टुडे. ठीक है. एंड डू बेसिकली ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करो रोज. Apart from, I know that XAT is more focused on reading and other skills. VALR में reading and CR 80% तो reading and CR ही है ना. But grammar कम से कम 2 questions आएंगे और उनमें गलती ना हो जाए, बस यही है मामला. ठीक है. चलिए guys, see you, bye bye.